आप कोई वो बताएं क्या हम पढ़ क्या रहे थे। अब नोट्स लिख रहे हैं ना साथ, उसमें से देखें कुछ। Wow, this is pretty bad. We were, I think, talking about, we were finishing up that the when God created Adam, that part. We're way back here Down, yeah. at the fall. So we're at Genesis 3. Mm-hmm. Okay, fine. So we're in that second creation, or that second story, Mm-hmm. where he's explaining why human beings die. तो हम देख रहे थे कि जो उसकी कहानी है जिसके अंदर इंसानों के बारे में बात हो रही थी कि वो मरेंगे। सर उससे आगे चले गए थे हम लोग। Tell me the exact where we were. सर कुछ सही तरीके से याद नहीं, लेकिन ये सारी स्टोरी हम लोग ना इससे आगे निकल चुके थे। जो मेसोपोटामिया वाली सारी जो मार्डरूक और वो सारी स्टोरी है ना, उससे आगे निकल चुके थे हम। Yeah. Okay. Let me look up. Marduk. That we finished like 2 weeks ago. Yeah. All right. Well, we're going to pick up here. So in Genesis 2, God makes human beings and he creates plants and says you can eat these, but don't eat that plant that's in the middle of the garden. और हम ये जानते हैं कि खुदा ने जो है जब पौधों को बनाया, इंसान को बनाया, तो खुदा ने कहा कि जो बाग के दरमियान का दरख्त है उसमें से आप मत खाना। And you know, the promise that you're going to die, people treat that like it's a threat from God, and it's not a threat, it's a warning. If you eat this, you're going to die. If you eat poison, you will die. That's what he's doing. जब खुदा कहता है कि तुम इसमें से खाओगे तो मर जाओगे, खुदा दरअसल जो है वो लोगों को डरा नहीं रहा, बल्कि खुदा उनको बता रहा है कि अगर वो खाएंगे तो मर जाएंगे। ये एक थ्रेट नहीं बल्कि वार्निंग है। ऐसे ही जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने जो है फलानी चीज नहीं खानी, तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि उसका नुकसान हो सकता है। तो खुदा भी इसी पोजीशन में था, खुदा को पता था कि जब ये खाएंगे तो जो है वो उनका नुकसान होगा और वो मर सकते हैं। And then God says, for the first time in the story, something's not good. And God says, it is not good that the man should be alone. I'll make a helper suitable for him, one that fits. और ये पहली दफा है जब खुदा ने ये कहा कि जो है अच्छा नहीं है, तो खुदा ने ये पहला मर्तबा ये जुमला बोला कि अच्छा नहीं है। And so he makes all the animals and brings them to the man, and the man names them. But in the animals, God does not find a helper suitable for him. तो खुदा ने जो है वो जानवरों को बनाया, लेकिन जो खुदा को उसके अंदर से कोई भी ऐसा
जो है वो नजर ना आया जो उसके लिए मददगार साबित हो। But then he causes a deep sleep, takes one of the ribs, and from the rib he builds a woman. I think we talked about this. Yeah, I think so. And he builds the woman. या उसने जो है उसकी जो है पसलियों में से एक पसली निकाली और उसने जो है वो वुमन को बनाया। But notice what the man says. He लेकिन goes, in 23, he goes, this is the time. This is the time. Bone for my bone, flesh for my flesh. This one will be called woman, Isha, because from man, Ish, this one was taken. So he goes, okay, you got it right this time. और खुदा ने जो है उसको जो है वो ईशा कहा क्योंकि वो जो है ईट से निकली थी। All right. And then you get this conclusion from the author. Therefore, a man will leave his father and mother and cling to his wife, and they'll become one flesh. And the man and his wife were both naked, were not ashamed. I'm pretty sure that's where we left off. Yes, that's exactly place we left off. You're right. Well, did you translate that? और खुदा ने जो है उसको कहा कि जो आदमी है वो अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहे। Now, in chapter 3, it says the Nachash was cleverer than any wild animal that Yahweh God made. And और that word is normally translated serpent. But we talked a lot about cherubs and everything else. And a Nachash can just mean reptile. But anyway, this reptile or this serpent was more clever than any other creature that God made. और खुदा ने जो है वो एक बात और कही। खुदा ने कहा कि ये जो हमने बात की थी कि जो इब्रानी के अंदर जो साम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है नखाश। तो नखाश को जब हम देखते हैं तो उसके मुख्तलिफ जो हैं जो उसके बारे में बात होती है, हम इसको बहुत तफसील से डॉक्टर वेंस के साथ देखेंगे। लेकिन क्या वो जो नखाश है वो साम था कुछ और था, हम उसको देखेंगे। Now, do you guys remember when we talked about what a seraph was, what a cherub was? We talked about the creatures of the divine council. This is a new group. This is a new What? group. This is a new So group. we haven't done that yet? Nope. Okay. All right. Might as well do it now then. Okay. Okay, let's do it like this. अब हम ये देखते हैं कि जो सांप है वो कौन है। इंतहाई जरूरी है कि आप इसको देखें कि जो सांप की जो बात हो रही है कि वो सांप है कौन। All right. We're in Genesis 3, but we're going to look at something right quick. हम जो है वो जेनेसिस के जो है उसके तीसरे बाब में है और हम इसके अंदर ये जो है एक तफसील देखेंगे।
If you look at Psalm 82:1, we read a song of Asaph. It says, God has stationed himself in the council of the gods, that is, in the divine council. In the midst of the gods, he judges. आपने जो है ये जो आप अभी पढ़ाया जा रहा है ये सब लिखना है और ये आपके लिए इंतहाई जरूरी है। यहाँ पर जो ज़बूर 82 है, अगर आप उसको निकालते हैं तो उसकी जो पहली आयत है वो कुछ इस तरीके से जो है वो लिखी है कि जो मैं उनका खुदा जो है, खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है, वो अल्लाहों के दरमियान जो है अदालत करता है। या जो अल्लाह का लफ्ज है ना वो भी खुदा का लफ्ज ही है, वो खुदाओं के दरमियान जो है वो अदालत करता है। So what is this? What's the Urdu read here? How does it read? It's totally wrong translation. Doesn't make any sense either. Okay. It says a guard is in the middle of a guard, and then they use a word like Allah, which is like kind of I mean, Allah is they are saying in a different kind of God, which is Allah is mostly a Muslim God, but they use particular this word, and He is among them. Oh, Yeah, they didn't say God; they said Allah, Allahu. It's like not the God, but kind of like a different way to say that. okay. Well, are the students going to understand what we're talking about? I told them already. This is the one you have to write down what we are saying. Okay. So the point being, God is a king. Okay. और यहाँ पर जो ज़बूर नवीस जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि जो खुदा है वो बादशाह है। And as a king, he has a court. You know, kings have courts. I don't mean law courts. I mean royal courts. You know, with the princes, and God has one of those. And we see it. और जब भी कोई बादशाह होता है तो उसका दरबार होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का दरबार है। And so that's what he's making a reference here. This is God and his advisors. This is the angels. This is the seraphim. This is the cherubs. They're all up in God's heavenly court where he rules as king. और यहाँ पर जब लिखा हुआ है खुदा की जमायत में, तो वो दरअसल लिखा होना चाहिए कि खुदा के दरबार में। जो खुद दरबार का मतलब ये नहीं कि जो बाबों का दरबार होता है, जो बादशाहों का दरबार होता है उसकी बात हो रही है कि जो बादशाह का जो जहां पर सारे उसके सामने वजीर और उसके बाकी लोग बैठे होते हैं ना, ये वही वाली जो है टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है कि खुदा की जमायत की जगह में होना चाहिए कि खुदा के दरबार में। So just think of God as a king. Now we have several accounts of this. Let's look at one. And और इसको जो है वो काफी तरीके से लिखा गया है। आए हम एक को देखते हैं। So the book of Revelation, we know the book of Revelation. आप सबको जो है वो मुकाशफा की किताब का पता। John gets a vision and he sees the throne of God. At once I was in the spirit and look, a throne stood in heaven. So it's the throne room of God. और जो यूहन्ना है वो एक विजन देखता है और उस रोया के अंदर भी वो खुदा के तख्त को देखता है। And so he sees this throne room where there are a bunch of little thrones
with some elders sitting on it. So this is God's council. This is his advisory board. तो वहां पर जो है वो इस तरीके से है कि एक तो खुदा का दरबार है और उसके अंदर खुदा का तख्त है और खुदा के तख्त के साथ और तख्त भी मौजूद हैं जो कि वो लोग हैं जो खुदा के साथ जिनके साथ बातचीत करता है। वो खुदा को मशवरा नहीं देते लेकिन खुदा उनको बताता है कि मैंने ऐसे करना। And in Isaiah 6, Isaiah saw the Lord seated upon a throne. So God is continually depicted as sitting on its throne. और यशाया की किताब के अंदर भी खुदा जो है वो एक तख्त के ऊपर बैठा हुआ नजर आता है। And in this case, the throne is in the temple because the temple is also God's palace. और इस केस के अंदर जो है वो जो उसका दरबार है वो एक हैकल के अंदर मौजूद है। And in here he has seraphim. There are seraphim that are helping God and they're talking to one another. और वहां पर खुदा की एक मखलूक मौजूद है जिसको हम सराफीम कहते हैं। So what I want you to see is that in the Bible, God is depicted as being a king. And like a king, he has a royal court. और खुदा जो है वो बाइबल के अंदर एक बादशाह की हैसियत पर से नजर आता है और जब भी कोई बादशाह होता है तो उसका दरबार लाजमी होता है। And the members of this royal court are supernatural beings. And the phrase used to describe them is sons of God. And sons of God, he doesn't mean literally children of God. It's an expression meaning immortals. They don't die. These are God-like creatures. और जो यहाँ पर जो एक लफ्ज इस्तेमाल आमतौर पर होता है तमाम चीजें लिखने की आपके कि खुदा के बेटे, तो ये ऐसे एक जो खुदा की मखलूक के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर जो कि कभी भी मरती नहीं है। So in Hebrew, son of is a way of saying member of the category of. So son of God would mean member of the category gods, which means you don't die and you have knowledge. तो इब्रानी के अंदर जो लफ्ज हम पढ़ते हैं कि खुदा के बेटे, उसका जो मतलब है वो है कि खुदा के वो बच्चे जो कि मरने के नहीं है। तो वो एक खास जो मखलूक है उसकी बात हो रही है। Now the various types of creatures in God's royal court are words that we're familiar with. Seraphs. और खुदा के जो है कोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ खुदा के जो क्रीचर्स हैं वो मौजूद है और उनके अंदर जो एक है उसको सरफ कहते हैं। And seraph comes from a word that means to flame or to burn, because seraphs are fire-breathing dragons, and they are God's personal attendants. Think of a butler. That's what a seraph is. और जो सरफ होते हैं वो एक ऐसी मखलूक है जिनके अंदर से आग निकलती है और ये हमेशा खुदा के पास खड़े रहते हैं कि खुदा की जो जैसे खुदा के जो कोई भी काम करना हो तो उसके लिए जो लोग खड़े नहीं रहते साथ, तो जो सरफीम हैं
ये हमेशा इस तरीके से खड़े रहते हैं, और सर्फ का जो मतलब होता है वो ऐसा मतलब, उसका मतलब होता है कि जिसके अंदर से आग निकलती है। And then the others are cherubims or cherubs. And a cherub, we have representations of these creatures from various cultures. For example, we have cherubs from Egypt, the Sphinx, the lion with the human head. Everybody knows what the Sphinx is. That's actually an Egyptian cherub, and their job is to guard stuff. They're usually found at entrances and openings, and their job is to guard. और ये जो उसके बाद जो है एक और मखलूक है जिसका नाम जो है करूबीम है। करूबीम जो है वो अमूमन आपने देखी होगी कोई ना कोई तस्वीर, जो कि इस तरीके से दिखाए गए हैं कि जिनका जो सर है वो इंसानी होता है और जो धड़ है वो शायद शेर का होता है। And then we have angels. We're familiar with angels. And remember, the word angel just means messenger. And that's what angels are. God uses them to deliver messages. और उसके बाद जो है वो फरिश्ते होते हैं, और फरिश्तों का जो मतलब है वो है कि जो खुदा के जो पैगाम है, जो फरिश्ते का मतलब होता है पैगाम देने वाला, और वो जो है खुदा के पैगाम जो है उनको लेकर जाते हैं। And in the book of Daniel, we have some beings called the Watchers. And in Daniel, they specify the Watchers as holy watchers, which implies that there are some watchers who are not holy, and it can be part of the fallen supernatural beings. But anyway, there's just another being, watcher. We don't quite know what they do. और एक और मखलूक जो है जिसका जिक्र दानियल की किताब के अंदर मौजूद है, और उनको हम कहते हैं कि वो निगहबान है। अब वो जो निगहबान है वो क्या करते हैं इसका हमें इतना ज्यादा नहीं इल्म। And then in Ezekiel, we get 4 creatures called the living beings. And it's pretty clear that they're actually cherubs, but they're a special category of cherub. And their job is to carry the throne of God. और इसके बाद जो है एक और जो हिजकिय्याल के अंदर एक और किस्म की बात होती है, जो कि शायद हमें ये कह सकते हैं कि वो भी जो है वो करूबीम है, और उनका जो काम है वो है खुदा के तख्त को लेकर जो है वो मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। And then we just read in Revelation 4, the 24 elders, who are human beings, I might add. These elders are human beings. So humans, remember, we talked about this when we did Genesis 1. When they created human beings, God was making additional members of the divine council. And human beings were designed to be members of the divine council, which meant we were designed to live forever and to have knowledge. So why don't we live forever? And why don't we have knowledge? Well, that's what the story is telling us that we're in now, Genesis 2-5. और हम भी जो है खुदा के बेटे हैं, और हमें भी खुदा चाहता था कि हमारी कभी भी मौत ना हो, लेकिन ऐसा ना हुआ क्योंकि इंसान जो है वो गुनाह के अंदर गया। तो खुदा जो है वो खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा के बेटे का जो मतलब है वो उसी के अंदर भी था कि वो कभी भी मरने का नहीं, लेकिन हम उसको देखते हैं कि ये ऐसा ना हो। And then we get this guy, the adversary, which
shows up in Job. और हम इसके बाद और What? हम no, actually your voice was cutting. Can you repeat, please? Yes. The adversary. Mhm. That's a job title. Hmm. And he shows up in Job, the book of Job, chapter 1. So we're going to look at it. उसके बाद जो है शैतान, जिसका मतलब बनता है कि जो एडवर्सरी, तो इसको उर्दू की मुझे नहीं समझ आ रही क्या, लेकिन वो ऐसा होता है कि जो आपको जो है वो गलत चीजें बताता है। इसका आम मतलब आप ऐसे कहते हैं। तो इसका भी जिक्र जो है वो खुदा के वो मौजूद है, और इसको हम अय्यूब की किताब के अंदर देखते हैं। So in Job 1, we read, there's a day when the sons of God, remember I told you that's just the expression meaning members of the divine council, supernatural beings, when the sons of God came to present themselves before Yahweh. And the adversary also came among them. So the adversary is a member of this group. And the question is it a specific person or is it a job position, a title? And the job title seems to be his job is to make sure that God looks at all sides of an issue. So if somebody makes a proposal, the adversary's job is to try to pick it apart so that God thinks about all aspects of it, whether to implement the policy or not, by making sure that he's looked at it. And that's his job. And so that's what he does with Job. You know, he says, hey, if you talked about, God says, have you seen my servant Job? And then the adversary goes right into his job and starts picking apart Job. Because that's his job. और जो एडवर्सरी है, जिसको हम तर्जुमा अपनी बाइबल के अंदर जो है वो अबलीस के तौर पर देखते हैं, इसका जो है अमूमन ये काम है कि वो देखता है कि जो कुछ जो है वो खुदा कह रहा है क्या वो वैसे ही मुमकिन है। तो ये उसका दरअसल जो है वो काम है। तो वो जो है हम अय्यूब की किताब में इसका जिक्र जो है वो देखते हैं। So, and finally, remember humans. Humans are members of the divine council. That was the whole point in Genesis chapter 1, verse 26. Remember, God says, let us make humans. We're going to make additional members of the divine council. And so he makes humans. But then in verse 27, he says, and in the image of God, he made them. Humans are the only one of these creatures that are made in the image of God. और खुदा जो है वो ये कहता है कि जो इंसान है उसको हम अपनी शक्ल और शबी पर बनाएंगे, और ये एक वाहिद जो है वो हस्ती है जिसको खुदा ने अपनी शबी के ऊपर बनाया। So we're reading in Genesis 3. And we have the Nachash. और हम जो है वो पैदाइश उसके तीसरे बाब के अंदर जो है वो नखाश को, जिसका तर्जुमा सांप के तौर पर किया गया, देखते हैं। And he's a Nakash and he's clever. But the question is, what is he? And Nakash can mean snake. Okay, it can. But it can also be a little more generic than that and can mean reptile. So it depends on what the context is. तो जो नखाश जो है इसका मतलब जो है वो सांप भी हो सकता है, लेकिन इसका जो ज्यादा बेहतर मतलब है
वो रिंगने वाले जितने भी जानवर हैं, जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है, तो वो इसका ज्यादा जो बेहतर मतलब है कि वो रेप्टाइल है। Hello? यस समीर। Yeah, who is this? Nick calling from Diabetic Healthcare Center. How are you, sir? Okay. So, snake, reptile. If we look at Deuteronomy 8, it talks about Yahweh leading Israel through the great and terrifying wilderness with its Nachash Saraphs. This word, अब which is usually जब translated fiery serpents, but specifically Nachash Saraphs. Okay. What does that mean? अब हम जब इस्तिशना की किताब उसके 8 बाब के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है, जो बात हुई है वो हुई है जलने वाले सांपों के मुताबिक। Well, it could लेकिन be poisonous snake. Could it be a supernatural being? Is it just talking about an earthly poisonous snake? It's not clear. Then we have Isaiah 6, which we looked at, but let's look at it a little more closely. तो हम जब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास जो तर्जुमे में मौजूद है वो है कि जो जलने वाले सांप, लेकिन जो अबरानी है उसके अंदर जो है वो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब सिर्फ सांप नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। हम इसको देखेंगे दरअसल जो है बाकी बाइबल के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कि ये दरअसल बात हो क्या रही। Well, let's look at Isaiah 6. So Isaiah is up in the temple, up in heaven, and he sees the throne of God, and above the throne stood seraphim. Okay, just called seraphim. और जब हम इशाया कोई 6 बाब के अंदर देखते हैं, आप इन तमाम चीजों को लिखें, बहुत जरूरी है। तो वहां पर लिखा है, जिस साल में अजरा बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठा देखा, और उसके लिबास के दरमियान से हैकल ममूर हो गई, और उसके आस पास सराफीम खड़े थे। Now, तो अब seraphim, the I am on the end of it, that's just the plural marker. So a singular is a seraph, and if you have more than one, you say seraphim. That's all the I am means. Makes it more than one. तो ये जो है सर ईम का जो लफ्ज है, ये ईम जो है वो जमा को जाहिर करता है, लेकिन इसके अलावा जो हम सिर्फ सरफ देखते हैं, तो उसका ही सराफ देखते हैं, उसका मतलब है कि एक जलने वाला। Now look what it says. Each seraph has 6 wings. So he's got 3 pairs of wings. Each seraph does. Well, that's not a normal snake. If you got a winged snake, something's going on here. तो जो लफ्ज है वो देखें, अबरानी के अंदर जो है वो नखाश का ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो इशाया की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इसके 6 जो हैं वो पर हैं, यानी कि 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। तो आप ये देखें ये किस तरह का सांप है कि जिसके जो है वो 6 पर मौजूद है। So with one pair, 2 wings, he covers his face, and with another pair, he covers his feet, and with the other pair, he flies. तो इसके जो 3 परों के जो हिस्से हैं उनका जो
तीनों का अलग अलग काम है। एक के जरिए से अपने मुंह को डांपता है, दूसरे दो के साथ ये अपने जो है वो पैरों को डांपता है, और जो तीसरा इसका जो दो पर हैं उनके जरिए ये उड़ता है। So seraphs can fly. अब हमें इससे ये पता चलता है कि जो सर्फ्स हैं वो उड़ सकते हैं। Now there's something else. What is its feet? The word feet can mean feet, but why does the seraph need to cover its feet? Feet is also, go ahead. यहाँ पर जो लफ्ज लिखा हो ना पैर, तो ये पैर का क्या मतलब है? पैरों को डांपने का क्या मतलब, समझ नहीं आ रही कोई। तो हम देखते हैं कि पैरों का जो इब्रानी की सेंस के अंदर और क्या मतलब होता है। But the word feet is also the expression in Hebrew for genitalia. In other words, the sexual reproductive organs. और जो इब्रानी जुबान के अंदर जो फीट है वो दरअसल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, जो जिनसी जो है वो हिस्से होते हैं किसी भी जानवर के, तो उसको इब्रानी के अंदर जो है वो उनका नाम लेने की बजाय पाँव कह देते हैं, कहते हैं कि अपने पाँव को कवर करो। तो इसका मतलब है कि अपने जो शर्म के हिस्से हैं उनको कवर करो। तो इस तरीके से उन्होंने इसको लिखा हुआ है कि दो जो है परों से वो अपने शर्म के हिस्सों को कवर करता है। This makes sense in that the high priest later on in the book of Leviticus is going to be told he has to wear a robe to cover his genitalia when he's approaching the altar so he doesn't expose himself to God while he's doing his ministry. And so it makes sense that the seraph would do the same thing. Now, if they have genitalia, it also makes sense for Genesis 6 when they get with the daughters of men and produce these offspring. अगर ये जो है एक काफी सेंस बन रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कहानी आजम होता था उसकी कमर के अंदर जो है वो बांधते थे एक रस्सी, ताकि जब वो खिदमत के लिए खुदा की हुजूरी में जाए तो उसका जो जिस्म है वो कहीं नंगा ना हो। तो ये एक पूरी सेंस बनती है उसके लिहाज से कि अगर वो लोग खुदा के हुजूर जाते हैं या रहते हैं, जो ये सरफ है, तो उनको जो है अपने जिस्म को, अपने जो अज़ा हैं उनको कवर करना जो है वो इंतहाई जरूरी है। All right. Now, going on in the story, we see the seraphim talking. Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. The whole earth is full of his glory. So we realize seraphs can talk. और हमें यहाँ से एक और चीज भी नजर आती है कि ये जो सरफ है, जिसको जमा हो तो ये सरफीम कहते हैं उनको, तो ये बोल भी सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फ़ौज है। So a little further down, one of the seraphs flies to Isaiah, having in his hand, the seraphs have hands, a burning coal that he had taken with tongs from the altar. So seraphs have hands and can hold tools. And with this tool, he's holding a burning coal. और हम आगे देखते हैं कि उस वक्त सरफीम में से एक ने सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मजबास पर से उठा लिया, अपने हाथों में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। तो हम देखते हैं कि उनके जो हाथ हैं वो उसके जरिए से जो है वो पकड़ सकते हैं, और यहाँ पर हमें देखते हैं कि उन्होंने जो है वो कोयले को, जलते हुए कोयले को पकड़ा है और उसके मुंह पर लगाया। So they have wings, they have faces,
They have feet. Is that genitalia? Don't know. They can fly. They can talk. They have hands and can hold stuff. Now, that's not the only thing about these guys. Still in Isaiah, let's talk about Leviathan. Now, you were just talking about Sarah, so why are you going to talk about Leviathan? Well, you'll see right now. In Isaiah 27, verse 1. In that day, Yahweh will punish with his great, cruel, mighty sword. He will punish Leviathan, the flying reptile. That's a Nechash. There's the word Nechash. He's going to punish Leviathan, the fleeing reptile. Leviathan, the twisty reptile. He will slay the dragon who is in the sea. Okay. जब हम 27 बाब पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर बताती है। तो लिखा है उस वक्त खुदावन अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा जो लेविथान जिसको कहते हैं, यानी तेज रो सांप को, और अजदहा यानी पेचीदा सांप को सजा देगा और दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा। Now, this Leviathan is called a Nachash. There's the word. Leviathan, who is marking on my paper? You? No, I'm not. I'm not even moving my cursor. It's not moving. I turn it off. So, Leviathan is he's a Nachash reptile, but now we see specifically he's a dragon. Huh. Now, what's that got to do? I mean, does that mean all Nachashes are dragons? No, but some of them are. And then we get a text from a neighboring culture where they're talking about, it's the same stuff. Still talking about Leviathan, calling him the fleeing serpent or reptile. He's the twisty serpent. But notice he's got 7 heads. तो हम ये देखते हैं कि आखिरी हिस्सा जो है उसके अंदर उसको दरियाई अजदहा कहा गया है, जिसको इंग्लिश के अंदर ड्रैगन जो है के तौर पर हम जानते हैं। तो उर्दू में उसके लिए उन्होंने दरियाई अजदहा कहा है। लेकिन इसके अलावा यही जो बात है उसी दौर के अंदर एक और जो अदब था उसके अंदर भी मौजूद है, और उसमें भी जो है लिखा हुआ है कि एक जो है वो बल खाता हुआ जो सांप है, और वो उड़ने वाला सांप है, और आखिर उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके 7 सर हैं। All right. So this is not in the Bible. This is not a biblical text. But then in the Psalms, we read about the heads of Leviathan, that he has more than one head. और ये जो हमने पहले पढ़ा है ये जो है वो बाइबल के अंदर नहीं था, लेकिन जब हम देखते हैं ज़बूर जो 74 है उसके अंदर जो है वो भी जो है वो इस चीज का जिक्र मौजूद है। 13 और 14 जो आयत है वो उसमें जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा है, तूने अपनी कुदरत से समंदर के 2 हिस्से कर दिए, तू पानी में अजदहाओं के सर कुचलता है, तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए और उसे बियाबान के रहने वालों की खुराक बनाया। तो यहाँ पर जो है इसके सरों का जिक्र है कि एक से ज्यादा जो सर है उसका हमें जिक्र होता नजर आता है। So Leviathan is a dragon, a twisty serpent who has 7 heads.
And then we go down in Job chapter 40, he has a whole discussion of Leviathan. And he goes on to say, God's talking, he's describing Leviathan, and he says, from its mouth go torches, sparks of fire flow. From his nostrils, smoke comes out like a blazing jar or rushes. His breath lights coals, and flames from its mouth come out. He's a fire-breathing dragon. तो हम यूब की किताब जो है उसके अंदर देखते हैं, और यहाँ पर जो है वो मैं इसकी आयत देखता हूँ 19 से, तो लिखा है 19 आयत 19, और उसके मुंह से जलती मिशलें निकलती हैं और आग की चिंगारियां उड़ती हैं, और उसके नथनों से धुआं निकलता है गोया देगी और सुगलती सरकंडे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो तमाम जो जिक्र है ये नजर आ रहा है कि ये क्या है। Okay. Now, what does Leviathan have to do with the Serath, and what does that have to do with Genesis 3? Well, this gets brought together in Revelation chapter 12. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लवाथान है और जो ये सांप है और जो सर्फ है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इसको हम मकाशवा उसके 12 बाब के अंदर देखते हैं। So, and another sign appeared in the sky, and behold, a great fire red dragon having 7 heads. Remember, we read about the 7 heads earlier, and 10 horns, 7 crowns, and he drags a third of the heavens, stars of heaven, and throws it to the ground. And there was war in heaven. Michael and his angels warring with the dragon, but the dragon and his angels warred, and he was not strong enough, nor its place found for him in heaven. And he, Leviathan, was thrown out, the great dragon, the ancient serpent, the one called devil and Satan. So what I want you to see is that the Nachash of Genesis 3 is Leviathan. And Leviathan is another name for the devil or for Satan. तो हम जो है मुकाशवा 12 बाब की 3 और 4 आयत पढ़ते हैं, तो उस पे इस तरीके से लिखा है कि फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा अजदहा, इसके 7 सर और 10 सींग हैं, और उसके सरों पर 7 ताज हैं, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारों खींच कर जमीन पर डाल दिए, और वह अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जो वो जने तो उस बच्चे को निगल जाए। और 7वीं आयत में लिखा है, फिर आसमान पर बड़ी लड़ाई हुई, मकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए, और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है, वो सारे जहां को गुमराह करता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। And notice he's called the devil, Satan, the deceiver of the entire inhabited world. And that is a reference to Genesis 3, where he deceives the woman. आप देखते हैं कि ये सारा कुछ, और जो मुकाशफा के अंदर इसकी एग्जैक्ट पिक्चर नजर आती है, हमने इसको इशाया की किताब में देखा, ज़बूर के अंदर से देखा, हमने इसको हिजकिय्याल के अंदर से देखा, तो इसका जो कंक्लूजन हमें नजर आता है वो 9 आयत के अंदर है
और वो बड़ा अजदहा यानी पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है, वो सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये जो है हमें जो पैदाइश जेनेसिस 3 बाप के अंदर जिस सांप का जिक्र हो रहा है, तो ये वही है। All right. So let's stop here. And somebody write down that we're going to pick up at Genesis 3, because we've now set the stage for what's going to happen. तो अब जो है आपको पता होना चाहिए अगले जुमे कि हमने कहाँ